आपने बोला अबाउट अ यूट्रस, सो बहुत बार हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं अबाउट द शेप ऑफ द यूट्रस, एट टाइम्स अ सेप्टम इन द यूट्रस, या कई लोग ये भी बोलते हैं कि यूट्रस चिपका हुआ है. सो हाउ टू गो अबाउट इट इन दैट केस? A very good question. A question which is actually, इसमें क्या होता है, what happens, the uterus should be a single, एक sac like structure होता है, ठीक है. There is a single sac like structure. Some people due to it is birth abnormality बोल सकते हैं, जन्म से, from birth only, some of the ladies are born with a septum. एक नॉर्मल हल्का सा एक वॉल होता है यूट्रस के अंदर, उसको हम सेप्टम बोलते हैं. या फिर बाइकॉन्वर्ट होता है, मतलब एक सिंगल सैक होता है, उसके जगह दो होता है. ऐसा भी होता है. कभी कभी क्या होता है, जैसे चिपका हुआ है, चिपका हुआ मतलब कुछ पहले का इन्फेक्शन हुआ होगा, या पहले कभी वॉश कराया होगा, मतलब डीएनसी करवाया होगा, बच्चा खराब किया होगा, उसके वजह से भी कभी कभी चिपका हुआ होता है. तो इसका तो उपाय है. इसका तो अगर हम देखते हैं कि हाँ, इफ वी सी दैट पेशेंट्स आर कमिंग विद सच प्रॉब्लम्स, देन वी डू नॉट call it unexplained. Then it is explainable and it is treatable, very much treatable. So we don't have to worry. These factors can be treatable through minor surgeries, which can be done hysteroscopically. Aajkal there are very good machines available through which we can just cut the septum, or we can repair the bicornuate uterus, that is दोनों sac को हम एक बना के repair कर सकते हैं. और चिपका हुआ होने से भी through hysteroscope we can just cut those filaments which are attached. So ऐसे करने से तो ठीक है. Otherwise, if there is some other reason, if we do not find these kind of problems, then it becomes a challenge. It becomes unexplained. Right. So then now we move on to tubes. So tubes का भी patent होना is very important. Then we say कि एक tube working है, एक tube में there's some infection या blockage है. So वहाँ पे हम मतलब what do we suggest? Naturally हम कितना time बोलते हैं या कितना time बाद आगे move on करने को बोलते हैं? Very good question, Shelly. Again, मैं बोलूँगी, अगर tubal pathology है, there is some problem with the tubes. So it depends upon what degree of tubal pathology is there. So it can be like both the tubes are totally damaged, पूरा block है. So हम लोग क्या करते हैं, हम एक्सरे करके देखते हैं कि ट्यूब्स का हालत कैसा है. इज इट पेटेंट? अगर डाई पूरा पास हो रहा है मतलब ट्यूब्स पेटेंट है, ट्यूब्स खुला हुआ है, ठीक है. ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर हम देखते हैं कि दोनों ट्यूब्स खुला है, देन इट्स ओके. If we see that one tube is open, one other tube is not working, then हम क्या करते हैं, अगर patient willing है, then we can go for opening the tubes. अगर patient willing नहीं है, तो ये समझाना है patient को कि there is 50% chance, because one alternate month one tube will function. Like इस महीने को इस tube से होगा, तो next महीने the other tube से होगा. So we have to explain the patient that the 50% chance there will be reduction in pregnancy by 50%. So if you're ready to go ahead like this, keeping in mind there's the fecundity rate, the pregnancy rate will go down. If the patient says okay, then okay. Otherwise we can go for opening the tubes. Number 3 बात है. So हो गया fully blockage, half blockage. एक चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी का, इज सटल ट्यूबल पैथोलॉजी. सटल मतलब क्या, ट्यूब्स खुला हुआ है बट स्टिल हमारा प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है. मतलब क्या हो सकता है, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द ट्यूबल मोटिलिटी. क्या होता है, द ट्यूब्स नीड्स टू मूव, देयर आर एंड्स, फिम्ब्रल एंड, एंड ऐसा टाइप का हाथ टाइप का स्ट्रक्चर्स रहता है जो जाके एक को कैच करेगा. सो व्हाट हैपेंस, समटाइम्स these fimbral ends needs to move like this. Sometimes what happens due to some other pathology in the abdomen, like endometriosis or some TB, some infection, this tubal motility gets disrupted. So in those cases also we might say it is unexplained, because we cannot diagnose this, we don't know what's happening. So that is also a very important factor in unexplained infertility, subtle tubal pathology. छोटा सा कोई प्रॉब्लम है ट्यूब्स में, ट्यूब्स खुला है बट फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है. सो कभी कभी ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो दिस इज नंबर 1 रीजन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, स्मॉल सम काइंड ऑफ ट्यूबल पैथोलॉजी. ट्यूब्स खुला है बट स्टिल द पेशेंट इज नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, मे बी देयर इज सम मोटिलिटी इशू इन द ट्यूब्स. सो इसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, ट्यूब्स बंद है तो वी कैन ओपन देम थ्रू लैप्रोस्कोपी. और अगर ओपन करने का एकदम चांस नहीं है, पूरा देयर इज इन्फेक्टेड एंड देयर इज वाटर, मींस हाइड्रोसल्फिंग्स हो गया है, देयर इज वाटर एक्यूमुलेशन, देन वी माइट हैव टू गो फॉर कटिंग द ट्यूब्स एंड IVF techniques. We might have to go for these, because IUI also we need the tubes. So the only
way, if the tubes are totally damaged, is IVF. ओके, सो ये तो मैम पैरामीटर्स थे कि हमें पता लग गया कि ये प्रॉब्लम आ गई, बट देन देर आर मेनी कपल्स हु कम एंड दे से दैट ऑल रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, हस्बैंड वाइफ ऑल Yes, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल. yes, सो yes, अभी हाउ टू गो अबाउट इट, एंड yes. उससे पहले व्हाट कैन बी द कॉज कि क्यों नहीं हो पा रहा है. ठीक ठीक. So very good question. This is our topic's question. Very much welcome to our need today. So sub reports normally. We cannot explain it. So that is unexplained infertility. We have done tube test, we have done ultrasound, we have done semen parameters, we have done thyroids, we have done prolactin, sub hormone हमने check कर लिया. Everything looks to be well and good. But still the patient has not conceived maybe 1 year constantly. But you have to make sure that the patient has stayed together also. कि coitus का, they have had regular coitus, the coital frequency was normal, and they had been staying together, and it was unprotected, they have not used any kind of contraception. So these are the points you have to, we being physicians, we have to make sure, because sometimes the patient do not understand, timing गड़बड़ कर देते. जो हमारा साइकिल है, साइकिल का बीच वाले दिन सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है. वी हैव टू टीच देम कि दिस टाइम यू कैन नॉट मिस टू हैव इंटरकोर्स. सो अगर सब पैरामीटर्स ये लोग कर रहे तभी भी we did not find the patient to be pregnant, we call, as you told, unexplained. Now your second question was how to cope up with it. What are the reasons? So reasons, one reason I've told you already in the last question, that it was due to some kind of fine tubal pathology. Number two reason is endometriosis. हल्का endometriosis, कोई ट्यूमर नहीं है, कुछ नहीं है, बट हल्का एंडोमेट्रियोसिस है. बट कोई ट्यूमर हम देख नहीं पाए, अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आया, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस ऐसा एक बीमारी है जो हमारा इंटरनल सिस्टम को खराब कर देता है. So it creates a bad environment in our body, as a result of which sometimes we might not attain pregnancy. Number three reason क्या हो सकता है? Age related. एज हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, बट शायद जो एग का क्वालिटी है वो खराब हो गया है, इसीलिए शायद हमारा प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है. और थोड़ा बहुत रीजंस हो सकता है, जैसे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, हमें कुछ नहीं मिलता बट कुछ प्रॉब्लम होता है. एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक है, husband's sperm count is normal, but the quality of the sperm is not good. So that can be one of the important reasons. So I've already stated 5 important reasons very clearly, which can be the reason, although unexplained, fir bhi we are explaining. Now, okay, we can see a question. Shall I go ahead? Yes, Shelly? yes, yes. So yes, there's this question where she says that I've got my HSG done in April and both tubes are open. In the next month, I had ectopic pregnancy, ovarian pregnancy, which is very rare. Now, what should be the next course of action to conceive? See, since